Can we start? Okay, student. Good morning, students. Today we will discuss the new topic that is related to the probability, and this topic is belong to your data handling. And this was today exercise was today exercise is 16.4, in which analyze the probability. In the previous classes, we have already done about the mean, median, and mode, and lot of question we have done related to mean, median, mode. Today in this lecture, we will analyze the probability. What is the basic meaning of probability, and what do you mean by probability? Probability means chance. Second meaning is chance. If we say that whether you will in next year whether you will join the next class or not, अब इसके कितने चांस है, आपके एक एग्जाम में 90% मार्क्स आएंगे, इस बात के कितने चांस है। तो ये जब चांस वाली बात आती है तो वहां हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सिंपली हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने एक कोई भी अपने एक इवेंट रख दी। इवेंट का मीनिंग होता है आपने कोई भी अपनी एक बात रखी हुई है। जैसे आपने कहा इवेंट कि सम स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट राम विल गेट 100% मार्क्स। स्टूडेंट्स राम विल गेट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। दिस इज एन इवेंट। अब ये आपकी एक इवेंट बन गई। हमने कहा कि हमने एक डाई को टॉस किया। बाय टॉसिंग ए डाई, सेकेंड इवेंट आई एम राइटिंग, बाय टॉसिंग by tossing a die या by tossing a coin, सिंपली लेते हैं कॉइन। आप जानते हो कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है। by tossing a coin you will get head. Either you will get head or either you will get tail. by tossing a coin you will get head। इस बात के कितने चांस बनते हैं, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। दिस इज इवेंट। And their events are also two type of event. Now we will analyze and we will study the meaning of event. There are two type of event. One is sure event, and another is impossible event, impossible event. We will understand by taking an example of sure event and impossible event. If you are saying that always remember that by tossing a die, if I am writing an कोई भी आप एक कॉइन ले लीजिए। बाय टॉसिंग ए कॉइन you will get either head or tail। या तो आपको हेड मिलने वाला है या टेल मिलने वाला है। तो ये तो निश्चित है कि आपको टेल मिलेगा या हेड मिलेगा। तो इस तरह की इवेंट्स को आप श्योर इवेंट बोलते हो, जिसमें आपको निश्चित पता होता है कि दैट इज श्योर कि दैट इवेंट इज गोइंग टू बी हैपन। Another example I'm taking from the sure event is that by tossing a die, number is not greater than 7. As you know that there are 6 numbers in a die. Die is a cuboidal shape figure.
क्यूबॉइडिकल शेप फिगर आपके 6 फेसेस होते हैं, एक फेस पे 1 लिखा होता है, सेकंड पे 2 3 4 5 6, ऐसे 6 नंबर्स लिखे होते हैं आपको 6 के 6 फेस पे। जैसे कि एक ये बुक हो गई, बुक एक क्यूबॉइडिकल शेप में है, तो डाई भी आपका एक क्यूबिकल शेप में होता है। तो यहाँ 6 फेसेस हैं, उनके 6 फेसेस पे आपके नंबरिंग लिखे होते हैं, जैसे कि आप गेम में देखते हो, लूडो वाले गेम में देखते हो, दैट इज लाइक दैट, जैसे कि आपका लूडो होता है। अब बाय टॉसिंग ए डाई, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 7, नंबर 7 से ग्रेटर नहीं होगा, तो दिस इज द श्योर इवेंट, this is the sure event. If I write in this form, this example, the same example I am modifying by tossing a coin, number is greater than 7, number is greater than 7, it means that this is an impossible event. By tossing a die, it is not possible that number will become greater than 7. So this is an impossible event. So you have to the language. In this example, it is given that by tossing a die, number is not greater than 7, number 7 से greater नहीं हो सकता, it means that this is the sure event. And this is, in this example, by tossing a coin, number is greater than 7, this is impossible event. So if we calculate the probability हम आपको एक फॉर्मूला भी बताएंगे। अभी इस एग्जांपल के थ्रू हम आपको ये बता दें कि प्रोबेबिलिटी, अगर आपकी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इफ यू वांट टू फाइंड आउट probability, short form I am writing a PROB, probability of of impossible event is 0. Always remember it, probability of impossible event is 0, and probability for the sure event, I am writing here, probability for the sure event, probability for this event is 1, and probability of any event cannot be greater than 1, कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। So these are the basic terms and basic definition that we'll use in your exercise that I explain related to your probability chapter, the probability exercise. So if you want to find out the probability, first of all you have to memorize this formula. Probability of any event is equal to favorable outcomes divided by number of outcomes. These are the favorable outcomes and number of outcomes. Study this formula. First of all, you have to write down as it is, and while doing the question of exercise, that probability of that event is 1, and third, the probability of impossible event is 0. Impossible event means event that is not possible, जो हो ही नहीं सकती आपकी probability, वो उस ऐसी event की probability आपकी 0 रहेगी, जो आपकी event हो ही नहीं सकती। From the exercise 16.4, we will understand the sure event and impossible event, and what probability are possible, what are not possible, with this first example. Exercise 16.4, first question is that tell whether the following is a certain to happen. आपको बताना है इनमें से कौन सी probability certain to happen है and impossible to happen जो हो ही नहीं, and can happen but not certain, and that
कैन हैव बट नॉट सर्टेन, बट वो आपकी सर्टेन नहीं है. द फर्स्ट इज यू आर older today than you are older today than yesterday. तो ये तो श्योर है, दिस इज सर्टेन इवेंट. तो इन द फर्स्ट पार्ट exercise 16.4 first question, first part, I am reading again. You are older today than event, sorry, you are older today than yesterday. अब हाउ आपको बताना है कि ये कौन सी तरह के इवेंट्स बनने वाली है. या तो आपकी ये सर्टेन टू हैपन, ये निश्चित है, होगी ही, आपको ये बताना है सर्टेन टू हैपन. सेकंड पॉइंट आपको इसमें ये बताना है इम्पॉसिबल टू इवेंट, इम्पॉसिबल टू हैपन means any event which is not possible, that it means that this is impossible event. And can happen, third part is can happen but not certain, not certain. अगर हम आपको कह दें कि आज बारिश होगी, इवेंट ले लें टुडे विल बी रेनी डे, तो इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, श्योर इवेंट नहीं है ये कि आज बारिश होगी, बट इट कैन हैपन, हो सकती है, बिकॉज टुडे इज अ क्लाउडी डे, दैट टुडे कैन बी रेनी डे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, दिस इवेंट इज नॉट सर्टेन. So first part, first question, first part I am reading again. You are older today than yesterday. That event is certain to happen. That event is certain to happen. ये निश्चित है कि आपकी रहेगी इवेंट ये. नेक्स्ट इज 200 पीपल कैन सिट इन मारुति कार. क्या ये पॉसिबल है कि 200 पीपल, ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके 5 सीटर कार है तो आपके 5, 6, 7 पॉसिबल हो सकते हैं. क्या 200, 200 के 200 आपके 200 पीपल कैन सिट इन मारुति कार? इट्स इम्पॉसिबल इवेंट. दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल टू हैपन. ये कभी हो ही नहीं सकता कि 200 पीपल एक मारुति कार के अंदर आ जाए. नेक्स्ट, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप. व्हेन यू टॉस ए कॉइन इट में बी हेड. अब हाथ ही सकता है, नहीं भी हेड कोई आना जरूरी नहीं है, टेल भी तो हो सकता है. सो फ्रॉम दिस कैन हैपन, हो सकता है कि हेड आ जाए व्हेन यू टॉस ए कॉइन, तो टेल भी तो आ सकता है. सो वी विल राइट हियर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन, दिस इज नॉट सर्टेन. नेक्स्ट पार्ट इज a die when tossed shall land up with 8 on the top. जब डाई को आप टॉस करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डाई में आपके 6 फेसेस होते हैं. अब डाई आपकी एक फेस पिक्चर होती है, जैसे आपने लूडो गेम के अंदर देखा होगा, नंबरिंग लिखी होती है या डॉट्स की फॉर्म में होता है, वहां एक डॉट, फिर यहाँ पे सेकंड 2 डॉट, दूसरे फेस पे, थर्ड फेस पे 3 डॉट, फोर्थ फेस पे 4 डॉट, फिफ्थ फेस पे 5 डॉट, सिक्स्थ फेस पे 6 डॉट. सो या फिर आपको नंबरिंग लिखी हो सकती है, ये इस तरह के क्यूबिकल फिगर में आपकी नंबरिंग लिखी हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज योर डाई. Fourth part is a die when tossed shall land up with 8 on the top. क्या 8 कभी आ सकता है? No, it's not possible because there are 6 numbers only, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is impossible event. So this event is impossible to happen. This event is impossible to happen. Now next is fifth part. India will win the next test series. ये कोई सर्टेन तो हो नहीं सकता, बट ये हो भी सकता है. यहाँ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता. इंडिया कैन
win the next test series. India will win that next test series can happen, but not certain. This event is can happen, but not certain. I'm hoping that you are getting these events and you are understanding what is the meaning of certain to happen, impossible to happen, and can happen but not certain. You are getting these points with the help of this question. In the sixth part, tomorrow will be the cloudy day. अब ये cloudy day है, ये sure event तो हो नहीं सकती, impossible भी नहीं हो सकती है. It means that this can happen, but not certain. This is not certain कि कल tomorrow आपका rainy day ही रहेगा. This is not certain. In the last part, the next traffic light seen will be green. आप ट्रैफिक सिग्नल से जा रहे हैं, किसी मार्केट से जा रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स आ रहे हैं कि अगले वाला ट्रैफिक सिग्नल भी ग्रीन होगा. दिस इज नॉट सर्टेन. हो सकता है कि वो हो जाए, कैन हैपन. दिस में भी हैपन दैट नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी ग्रीन, बट नॉट not certain. This is not certain. I hope you are getting these questions and the possibility of any events. So now we will start the second question. Second question is, coin is flipped to decide which team will start the game. जैसे आप गेम खेलते हो तो आप कॉइन को टॉस करते हैं कि सबसे पहले क्रिकेट मैच कौन खेलेगा, बैटिंग कौन करेगा, टॉस करते हैं ना क्रिकेट मैच में. तो एक कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टीम विल स्टार्ट द गेम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम. अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ही टीम स्टार्ट करेगी गेम को. अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था. नाउ आई एम राइटिंग दैट फॉर्मूला अगेन. If you want to find out the probability of any event, probability of any event, probability is equal to favorable outcome divided by total number of outcomes. What is the meaning of favorable outcome? In this question, event is tossing a coin. I am writing here event. Event is tossing a coin. This is your event. What are the favorable outcomes when you toss a coin? And your event is tossing a coin and your team will start the game. अब आपने हेड और टॉल किया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे इस आउटकम में? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? देयर विल बी 2 आउटकम. या तो आपका हेड आएगा, हेड, या फिर आपका टेल. ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉसिबिलिटी वी कैन राइट हियर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर ओनली 2. अब आपने उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. आपने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. आप एक चीज को एज्यूम करेंगे, एक चीज को तो अपनी टीम के फेवर के लिए आपको कहा जाएगा ना, या तो आप हेड को चूज कीजिए या टेल चूज कीजिए. आपने अगर हेड को चूज किया और टॉस करने से हेड आया तो आपकी टीम स्टार्ट करेगी गेम. यही गेम का प्रोसेस होता है ना. तो आपके फेवर में आउटकम्स कितनी है? फेवरेबल आउटकम. हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? There are only one favorable outcomes. या तो आप हेड को चूज करेंगे या टेल को चूज करेंगे. एक ही टोटल 2 इवेंट है, हेड है टेल है, आप एक को चूज करना होगा. सो प्रोबेबिलिटी विल बिकम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, probability will become favorable outcome divided by total outcome. This will be 1/2. So this is your second question related to your probability. You have to understand this formula. In this formula, favorable outcomes divided by total number of outcomes. Favorable outcome means that outcome which are in your favor. Means if you are tossing a coin, in your favor there is only one outcome. Whether you will choose head
or tail. But total number of outcomes are 2, head and tail. So we will to find the probability, we will divide favorable outcome, that is 1, divide by total number of outcome, that will be 2. So our probability will be 1 by 2. Got it? So in question, now we will do the next question. Third, in the third question, concept of probability will be all of your questions. There are 6 marble in a box. एक बॉक्स में 6 मार्बल्स रख दिया आपने, एक 6 मार्बल रखे हुए किसी बॉक्स में. सपोज कीजिए 6 मार्बल रख दिया आपने, 1 नंबरिंग डाल के 1 2, थर्ड मार्बल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. There are 6 marble. First part is, what is the probability of drawing a marble with the number 5? आपको you have to find the probability with a number. Total number of outcomes will be, there are 6 marble in a box and out of 6 you have to choose 1 marble. Out of 6 you have to choose 1 marble and that marble should be marked 5. And there are 1 marble which is marked as a 5. So favorable outcome will be 1 and total number of outcome will be 6. So probability of this event will become, probability will be equal to favorable outcome, that is 1, and total number of outcome is 6. This will be the probability, and each of probability you have to write down also this formula. In each and every question you will write down this formula. So from the second part, what is the probability of drawing a marble with the number 2? Now second part, you have to draw a marble with the number 2. You have to draw this marble. And how many marbles are there in this box which are numbering 2, which have a number 2? There are only 1 marble. So for the second part, favorable outcome will become also 1 because there are only 1 marble which have number 2, and total number of outcome will become 6, and probability of this event will become 1 by 6. Probability will become 1 by 6 for your second part. So this was your third question. In this question, I am repeating this question again. There is a box, and in this box there are 6 marble with the numbering 1 2 3 4 5 6. In the first part of your third question, you have to find out there is an event. An event, what is an event? Event is that you have to take out a marble with the number 5. So first of all, you have to write down this formula. Probability is equal to favorable outcome divided by total number of outcome. And for the first part of this question, favorable outcome will become 1. Favorable outcome means आपके फेवर में कितनी ऐसी आउटकम्स हैं और आपकी इवेंट क्या थी, आपको एक ही नंबर को निकालना है जिसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, ये आपके फेवर में है. और ऐसे नंबर तो इसमें सिर्फ एक ही है, एक ही मार्बल पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो ऐसे कितनी आउटकम्स होंगी? देयर विल बी, and total number of outcome are 6 because there are marble with the numbering 1 2 3 4 5 6. So probability will become favorable outcome divided by total number of outcome. This is the third question. In this way, we will try to solve the fourth question. And now come to the fourth question.
You have to read out this question. Fourth question. A die is tossed once. A die is tossed once. एक ही बार toss किया गया. You know that in case of a die, there are 6 faces with the numbering 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is your die. The probability of getting a number less than 3. In a die, there are number 1, 2, 3, 4, 5, 6. In first part, you have to find the probability. In first part, you have to find the probability of getting a number less than 3. Means 3 से कम नंबर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 3 से कितने नंबर कम है? 2 ही नंबर कम है. Total there are 2 number which are less than 3. So favorable outcome will become 2. Number of outcome will become 6. And probability for that event is favorable outcome divided by total number of outcome. This is not your answer. You have to reduce this value. 2 1 ja, 2 3 ja, and you will get 1 by 3. Probability of this event is 1 by. In the second part, you have to get a number. Getting second part due to the lack of space. Don't worry, sir. Only 3 minutes are left, so we will conclude this question. And in the second part, probability of getting a prime number. There are how many prime numbers? 2 is a prime number. 3 is also a prime number. 5 is also a prime number. So in case of second part, you have to find the probability of getting a prime number, and favorable outcome in that case will become 3, because there are 3 prime numbers. First prime number 3 and then 5. So total number of favorable outcome is 3, and total number of outcome is, as you know, the total outcomes are 6. So probability will become 3 by 6, 1 by 2. You'll get your answer 1 by 2. In the third part, you have to find the probability of a number greater than 2. Greater than 2. How many numbers which are greater than 2? 2, 3, 4, 5, 6. In case of die, there are 6 numbers, and number which are greater than 2 are 3, 4, 5, 6. So in that case, in third part, favorable outcomes will be, total number of favorable outcome will be 4, and total number of outcomes are 6. So probability will become, I'm writing short form, 4 by 6, and after dividing you will get your answer. 2 2 ja, 2 3 ja, and probability will become 2 by 3. And students, you are observing in all of the case probability कभी 1 या 1 से ज्यादा नहीं आई है. अभी तक probability हमारी 1 या 1 से कम रही है. So always remember that probability of any event, probability always less than or equal to 1. या तो एक रहेगी. So your homework is that you have done 16 exercise up to 4th question related to your probability. You have to try the 5th and 6th question also. Otherwise, I will do in next lecture या next period. जब भी आपको टाइम मिलेगा, नेक्स्ट पीरियड जब भी होगा तो हम उसमें आपका 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे related to your probability. And you have to study the terms related to your short event जो आपके बुक में given है, that is page number on 329. On page number 329, the definition of probability
and sure event, impossible events are given, and you have to read that definition from your book. So as we are going to complete this chapter in the next period. Yeah, in next chapter that we will start will be visualizing the solid state. Okay, students.